Good morning, all. So I welcome you all in this 57th lecture of data systems and algorithm. Am I audible to you all? Yes, sir, you are audible. I'm going to share my screen and let us start the class. Is it visible to you all? Yes, sir, it is visible. Should we start now? In the last lecture, we have completed about the threaded binary tree. We have completed also binary search tree, various operations on binary search tree in the previous class. And after that, we have learned about threadings in the binary search trees or binary tree, even simply we should know. So threading, we have seen how threading can be done, how many different kinds of threaded binary trees are there. One-way threading, two-way threading we have learned. In order traversal of the binary tree, we have seen how the threading can be done. What are the benefits and drawbacks of threading? We have also seen. So, do you have any doubt in that? You can ask. Otherwise, we are moving on to the next topic, that is AVL tree. Should we move on? सर अब थ्रेडेड ट्री में और कुछ नहीं बचा है जैसे ट्रेवल्सर वगैरह उसकी ट्रेवल्सर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं. So we are starting now the next topic, that is AVL tree. So tell me what is the, we have already also discussed in the previous classes that what could be the, like on which parameter the operations on binary search tree, or we can simply say binary tree depends. किस पैरामीटर पर बाइनरी ट्री के ऑपरेशंस डिपेंड करते हैं? सर एक बार दोबारा रिपीट करना. On which parameter the operations of binary tree depends? रूट नोड की पोजीशन. No, anyone else? On which parameter we? Number of nodes. Number of nodes, or anything else? No. It is like in binary search tree, it is complexity of insertion and deletion is. हमने देखा था binary tree में insertion and deletion की complexity क्या है? I have seen discussed. big O of n. We have seen a table log base 2n. Log base 2n, very good. So we have seen a table in which we have compared array linked list and the binary tree, and we have seen that it is big of log n. And at that time I have discussed ki on which parameter it depends actually. Complexity किस पर depend करती है? Binary search? No. Height of a tree. n-1 हाँ. Height of a tree. याद आया कुछ? We have discussed that height of the tree. Yes sir. Height of the tree yes, is there. Height of the tree. So please remember that thing. This is very important actually. ये पूछा जाएगा, कई बार काम भी आएगा ये. Like जैसे अभी, like in AVL tree when I am starting with this only because it is very important in tree actually. So complexities of the operations in a binary tree always depends upon the height of the tree. Okay, जितनी ज्यादा आप ट्री की हाइट होगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा आपका ऑपरेशन उसके ऊपर. Okay, so now tell me, suppose I am having a binary like list of the elements. Say it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका binary search tree बनाना है हमको. What will be the binary search tree for that? What will be the binary search tree for that? Can anybody tell me? First, we need to choose a single number so that we can decide the left subtree and the right subtree. You have to create the binary search tree of that. Just tell me how you will create it.
10 elements are given to you, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What could be the binary search tree? Do it fast. Binary search tree root node will be 1. 1. 1 will be the root node. Is it okay to all? Then 2. 2 कहाँ आएगा? लेफ्ट Right-hand पार्ट में side. Right of 1, right 3, of 2, 1 1. Right Left of of 4, 2. 5, 6, and so on. In this way, the tree will be created. Yes or no? This will be right food only then. Yes. सर ये Is तो this a स्क्यू binary ट्री tree or बन this? गया. Yes. Is this a binary tree for this given sequence? Yes, sir. This is a binary tree, but not a binary search tree. Is this not a binary search tree? Yes sir, it is not a binary search tree, but it is a binary skew tree. Anyone else? Is it a binary search tree or not? Sir, it is. So it is a Why- binary search tree. So why you are Sir, not it is a saying? binary search tree. So why you are not saying like जब वो लोग बोल रहे हैं कि it is not a binary search tree, then you should tell na fast. You should oppose it. Why it is not a binary search tree? Is it not following the binary search tree properties? All the nodes, greater nodes are onto the right side of the node, and all the lesser nodes should be onto the left side of a node. क्या ऐसा नहीं हो रहा है इस ट्री में? क्यों अजय? Yes, sir. हो रहा है. Then why Sir, is why it it is? compulsory that we only take the first element as the root node in this to Definitely, create in this binary binary, set? yes. Whenever the sequence is given to you, we have to take the first one as a root of the binary search tree. Okay, then sir, it is in binary search tree in a following the all greater than numbers. Let me remind you, in binary tree, there is not a rule to insert a node. Okay, आप कैसे भी insert करेंगे node को, हम कहीं कोई rule नहीं apply नहीं करेंगे. But in binary search tree, we have learned a rule that all the left all the nodes in the left subtree should be lesser than the root node, or all the nodes in the right subtree should be greater than the root node. That is the rule for the binary search tree. And whenever the sequence is given to you, we need to start from the very first node. First node will be a root node, and then second node will be inserted according to a rule, then third node will be inserted, and so on. So now tell me, what could be the time complexity for insertion in a binary search tree, this kind of a binary search tree? We know that it is it is of depth 10. So अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्या वर्स्ट केस में क्या बाइनरी सर्च ट्री की मतलब ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है? वर्स्ट केस में Big of n. हाँ, big O of n Go है ना? of n. So big O of n will be the complexity for this kind of a search tree, which could be like, now the point is that as soon as the height is increasing of a binary search tree or a binary tree, the complexity of the operations will increase also. So our ultimate goal is to keep the height of a tree small. हमें ट्री की हाइट को कम रखना होगा हमेशा. तो हम उसी के लिए वर्क कर रहे हैं. ओके, हम जब भी ट्री पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे हमारे ट्री की हाइट कम रहे. Somehow we have like shortened the height of a tree in binary search tree, but still it has a drawback. Like in a sorted kind of a sequence, the tree could be a skewed tree. जैसा उन्होंने बोला अभी ब्रिजकिशोर ने कि it is a binary skewed tree. Very good, it is a binary skewed tree, but it is also a binary search tree. मेरा क्वेश्चन ये था कि binary search tree है या नहीं है. So it's a skewed tree. यदि हमारे पास sorted sequence होगी तो skewed tree बनेगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिकॉज उसकी हाइट ज्यादा होगी. Okay, so now what we need to do is like this kind of the input. Again, ये मैंने अपने स्लाइड में डाले थे. What if the input of the binary search tree comes in the sorted manner, either ascending or descending? Okay, it will be look like this way, and it definitely increases the time of the various operations. Now, for that we will try to balance the tree. हम इस particular problem को solve करने के लिए हम balance करेंगे tree को अब. So now we are learning for height balance tree. Okay, हम based on height we are trying to balance it.
Based on height, I am repeating, based on height we are trying to balance it. Actually balancing can be done in two ways. One is based on height and second one is based on weight. हम weight के बेस पर भी बैलेंस कर सकते हैं. वेट बैलेंसिंग आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, अभी हम हाइट बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं. सो हाइट बैलेंस ट्री इज अ बाइनरी ट्री. एवरी टाइम वी आर लर्निंग फॉर बाइनरी ट्री ओनली. आप बाइनरी ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं. ओके, बाइनरी ट्री which automatically maintains the height of the tree. Automatically word is there. We have some rules and we have some like formulas to maintain the tree, okay, height of the tree actually, and its subtree on each insertion and deletion of the node, and that tree tries to be a complete tree also. Complete tree की तरह दिख रहा है आपको ये? This example that I have put into it, Yes, sir. It is a complete or a full tree? It is complete tree. No. It is full binary tree because all levels include two child. So is it not a complete tree? Sir, complete full binary tree also complete tree, binary tree. but complete binary now, tree not. It is also known as, actually now we will learn one more term for that, perfectly height balanced tree. These kind of the tree will also known as perfectly height balanced tree, because अब इसको आप देखो in terms of height, यदि आपको भी कुछ भी नहीं पता है कि हाइट क्या होती है, तो क्या इस ट्री को आप हाइट बैलेंस बोल सकते हो? यदि हम इसको एक बैलेंस की तरह हम ट्रीट करें, रूट नोड को हमने सपोज हैंग किया है इस ट्री को, तो क्या ये बैलेंस ट्री होगा? बैलेंस है एक तरीके से हम देखें तो. इसके लाइक हाइट की टर्म्स में भी आप बात करो तो क्या ये बैलेंस है? यस और नो? यस सर, बैलेंस. बैलेंस है. बैलेंसनेस का मतलब ये हुआ, अब हम हाइट की बात कर रहे हैं. लाइक इसके 4, लुक एट दैट 4 रूट नोड. नाउ on the right, on the left, what is the height of this tree? It's 2. Okay, what is the height of this tree? It's also 2. So it is the balanced, perfectly balanced height balance, perfectly height balanced tree actually, because for every node, left subtree and the right subtree are balanced actually. Okay, now we will learn how the height will be calculated for a specific tree. Okay, so now examples could be AVL tree and red black tree. So AVL ट्री हम अभी पढ़ रहे हैं और रेड ब्लैक ट्री हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो हाइट बैलेंस ट्री में हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर और द हाइट्स ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री इन अ हाइट बैलेंस ट्री. हम कैसे बोलेंगे कि ट्री भी हाइट बैलेंस है या नहीं है? केवल देख के हमें पता नहीं लगेगा. ये इसमें देख के हमें समझ में आ रहा था कि ये बैलेंस है, लेकिन कुछ ट्रीज और भी होंगे जिसको हम देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि बैलेंस है या नहीं है. तो हम कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट थिंग इज दैट वी विल कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड. प्लीज कंसंट्रेट ऑन दैट, बिकॉज ऑन दिस स्लाइड सारा एवीएल ट्री बेस होगा आपका. ओके, वी कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड. प्लीज अंडरलाइन दैट थिंग, ईच नोड. हम हर नोड का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे. Now the balance factor of each node should be in the range of this -1, 0 or +1. For this particular tree, हमने ये बोला कि हाइट बराबर है. ओके, बट हम परफेक्टली हाइट बैलेंस की बात कर रहे हैं इस केस में. लेकिन एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्री अ परफेक्टली हाइट बैलेंस ट्री. हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होगा कि नंबर ऑफ नोड्स इस तरीके से हो कि हम परफेक्टली हाइट बैलेंस ट्री बना सकें. सो उस केस में हम क्या बोलेंगे? केवल हम बोलेंगे हाइट बैलेंस ट्री बनाने की कोशिश करेंगे. ओके, so for that what we will. हाँ सर, बैलेंस फैक्टर क्या है यहाँ पर? बता रहा हूँ बेटा, मैं अभी बता रहा हूँ. मैंने बताया नहीं, अभी पूरी स्लाइड खत्म हो गई. द बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड शुड बी इन द रेंज ऑफ -1, 0 and 1. नाउ ठीक है, अब यदि इस रेंज में नहीं होता है तो वो बैलेंस नहीं होगा, नॉट अ बैलेंस ट्री. ठीक है, यदि अब बैलेंस फैक्टर क्या है पहले हम ये देख लेते हैं. व्हाट इज द बैलेंस फैक्टर? बैलेंस फैक्टर इज द हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री minus height of right subtree. I am repeating, height of left subtree minus height of right subtree. हम दोनों सबट्रीज की हाइट निकालेंगे उस पर्टिकुलर नोड के लिए, और फिर हम उसका बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन दीज टू. If this balance factor value
is equals to -1 or 0 or +1, then it is known as height balanced tree. Otherwise the tree will not be as a height balanced tree. Okay, now look at that tree. First example देखिए slide में आप. For B के लिए लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? A. उसकी हाइट कितनी है? 0. ओहो, height is 1. Height is 1. लेवल Okay, प्लस height is 1. the yes sir. longest path from root to leaf. तो एक ही नोड है तो एक ही पाथ बना, तो हमारा एक इसकी हाइट 1 आई. लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट सब ट्री की हाइट 1. सो बैलेंस वेक्टर क्या हुआ बी के लिए? 1 - Zero. 1, that is 0. Okay, definitely for every leaf node, height balance will always be, sorry, balance vector will always be, for leaf node balance vector will always be 0. 0, because लीफ नोड के लिए कोई राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री नहीं होगा, तो दोनों की हाइट कितनी हो जाएगी? 0. तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको? एक्चुअली 0 - 0. इज इट ओके? यस और नो? Similarly for C it will be 0 - Okay, 0, sir. that is 0. Okay, now come on to the second example. C is a root node, B is second left child, and A is the next third level left child. So now A का बैलेंस वेक्टर कितना है? 0. Because it is a leaf Because it is a node. leaf. B का बैलेंस वेक्टर कितना है? 1. कैसे आया ये 1? -0. Then 1 1 - - 0. 0. Very good. Left सब ट्री की हाइट is 1, right सब ट्री की हाइट is 0. So it is 1. Okay. Now come on to the C. C के लिए क्या सीन है? What is the बैलेंस वेक्टर of C? 2. 2 - 0. 2 minus the height of C 0. is 2. 2 - 0. 2 minus 0. 2. Height of left sub tree is 2, but height of right sub tree is 0. So it is 2 0. - 0 is this 2. Is it clear to all? Yes, sir. So is Yes, this sir. tree is balanced? नो सर, बैलेंस नहीं, क्योंकि रेंज में नहीं आ रहा है ना. 1 - 1 से 0 - 1. कौन सी नोड के कारण रेंज में नहीं आ रहा है? C. node. Root node. Root node के कारण. सी वाले के. Very good. Then that node is node for which the balance vector is out of range. Actually, out of range it means it should be, it is not in the range this -1, 0 and +1. It is out of range. So that's why, because of C node, it is not a balanced tree. Is it okay now? While in the first diagram, Hello. please complete. Sir? Please, yes. Ask. So why we are only including the -1 to 1 range for conducting the balance factor? हाँ, that is we can say like हमने क्या बोला बेटा? Perfectly balanced tree क्या होता है? Now look at that tree. Okay, 1 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या है? यहाँ बताइए. 1 का बैलेंस बैलेंस फैक्टर क्या है? फैक्टर 0 हो तब वो फुली. 0. 3 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0. 5 का क्या है? 0. 0. 7 का? 0. 0. 6 का? 1. 0. Says 1. Who says 1? Sir. 0. 0. 0. No, sir. लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, इट इज 0 and 0. अब आप ये चीज देख लीजिए ना भाई. 5 का बैलेंस वेक्टर -7 का बैलेंस वेक्टर 0 - 0. फॉर 2 इट इज 0. 0. और 4 it is 0. 0. when all the It is nodes also 0. in a tree having a balance vector is 0, then it is known as perfectly height balanced tree. Now I have told you कि it is not possible in every real life situation कि हम perfectly height balanced tree बनाएं, because it also depends upon the number of nodes given to me. मुझे मान लीजिए 4 नोड दी गई हैं, तो मैं perfectly height balance बना सकता हूँ क्या? नहीं तो सर. No, sir. यदि 2 दी गई हो तो क्या मैं perfectly height balance बना सकता हूँ? 2 नोड्स में नहीं. या तो ट्री ऐसा बनेगा या ट्री ऐसा बनेगा. नहीं बना सकते, 3 होनी चाहिए. 3 होंगी तो मैं बना सकता हूँ. 1 में मैं बना सकता हूँ. अगेन 4 में मैं नहीं बना सकता, क्योंकि 4 में या तो मैं यहाँ जोड़ूंगा या फिर मैं यहाँ जोड़ूंगा, या फिर मतलब
इस तरफ जुड़ेंगे या इस तरफ जुड़ेंगे, चारों में से कोई एक जुड़ेगा, इट विल आल्सो नॉट बी परफेक्टली। सो हमने क्या सोचा कि हम बैलेंस्ड ट्री, क्योंकि परफेक्टली बैलेंस्ड ट्री इज नॉट पॉसिबल in every real life situation, so we have tried to reduce the balance factor. अब हमने क्या किया, इसको रेंज दी हमने एक -1 0 एंड +1, सो दैट हम इसको परफेक्टली बैलेंस नहीं बना सकते, लेकिन कुछ ना कुछ लेवल तक हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो रेंज, लेकिन अब ये रेंज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप इसको -2 से +2 कर दो, तो इसकी अगेन प्रॉपर्टी आपकी लूज होती जा रही है। तो आपका जो मोटो है, आपका हाइट बैलेंस करना है, परफेक्टली बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लिबर्टी देकर के -1 0 +1 तक किया। और अब सिंपल वर्ड में यदि मैं बोलूंगा, ये डेफिनेशन में है, जो भी इनके क्या नाम है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी ये इवेल्युएट किया था, रिसर्च की थी, उन्होंने इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन जो था वो हमारा क्या है, ये बैलेंस भी है कि नहीं है, बताइए, ABC। Yes, sir. बैलेंस बिकॉज सर। Perfectly इसमें सारी Balance, नोट्स का, बिकॉज सारी नोट्स का बैलेंस perfectly फैक्टर क्या है, balanced. रेंज में है, ठीक है। सो नाउ दिस ट्री, सेकंड ट्री इज नॉट अ ट्री which is balanced because of the node C, and that C node is called critical node। ये क्या और वर्ड टर्म आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, critical node, the node because of which the tree is becoming unbalanced is called critical node। Please remember that thing, critical node। So C is a critical node। Now come on to the third one। So what is the balance factor of C? A 0. means it is 0 and critical node is A. 0. Yes। What is the balance factor of B? 1. 1. What is the balance factor of B? -1. -1. Yes, that is what I was asking। मैं जानबूझ के यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आप फॉर्मूला देखिए बच्चे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इट इज 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज -1, so it is -1, okay, it is actually -1। Now similarly the balance factor of A is -2. 0 -2, it is -2। Here A is critical node. Here A is critical node because of A, that tree is becoming unbalanced। Is it clear to you all now what is balance factor, how you will calculate the balance factor, and what is critical node? Is these questions is clear to you, these terms clear to you? Tell मतलब me yes सर or no। -2 हम इसलिए जो बता रहे हैं क्योंकि इसमें हमको कितना और जोड़ना पड़ेगा जिससे ये 0 पर आ जाए। हाँ, thank you very much। So is it clear to all now? Any doubt, yes or no? Please be fast। It's clear. So now I am coming on to the AVL tree। Okay, so AVL tree is a self-balancing binary search tree। Please read carefully, it's a binary search tree, it means we will follow the property of binary search tree also, where the difference between the heights of the left subtree and the right subtree cannot be more than 1 for all nodes। Okay, it means what the range should be same, -1 0 and 1। डिफरेंस बिटवीन, यहां पर आपको ये लिख देना चाहिए, बल्कि इवन मुझे ये लिखना चाहिए कि मोड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, मोड मतलब समझ में आता है आप लोगों को? मोड इज क्लियर टू ऑल? यस सर। मतलब इसकी जो वैल्यूज हैं वो ये होनी चाहिए एक्चुअली। ओके, वैल्यूज जो हैं वो ये होनी चाहिए आपके इस केस में। सो हम ये बोलेंगे रेंज शुड बी -1 0 to 0 and 1, बिकॉज -1 भी होगी। So AVL tree is a self-balancing binary search tree। We need to follow the properties of binary search tree also, where the mode of the difference between the heights of left and right subtrees cannot be more than 1। It means it should be into the range -1 0 and 1 for all nodes actually। आपको ये भी ध्यान रखना है कि it should be for all nodes।
Is it okay? Now this is an example of the AVL tree. Okay, now calculate the balance factor of 4 fast. 0, 0. Very good. Balance factor of 5. 1, 1, 11. 0, 0, 17. 0, 0, 8. 2, 1, 1. 1, For 18. 1, For 12. 0, 0, 1, 0. 1. Why 0? Why 0? Because it's left subtree and right subtree both have 1 balance factor, and if you are going to subtract, then it will give 0. फॉर्मूला क्या है? left Balance subtree factor height minus right height of subtree left height. subtree minus height of right subtree. In this, the height of left subtree of 12 is 2, 3. Height of left subtree of Yes, sir, 12 is 3. 3. Height of right 3, subtree. Height of right subtree of this is 2, 3 minus 2. 1. 1, 1. Okay, sir. Is it clear now? Sir, clear. Left subtree of 8 is of height 2. Right subtree of 8 is of height 1. Similarly, here it is 2. 1 minus 0. It is 1 minus 0. Rest is 0 minus 0 because they are leaf nodes. So is it okay now? How we are calculating the balance factor? Now tell me, is it a balanced tree? Yes, sir. It's a balanced tree because 3 and it is minus also 2 The range is minus yes. minus 1. It is a range में है sir. AVL. It is an AVL tree which follows the properties of BST as well as the balance factor of each node is in the range -1, 0, and +1. Is it following the BST properties? Yes sir, it is following the BST binary search tree के property follow कर रहा है क्योंकि इसके जो 12 से तो क्या ये AVL tree भी है? Yes, it is Yes, an sir. AVL tree because ये binary search tree भी है और ये इस range को भी follow कर रहा है. Is it clear now? What is an AVL tree? So AVL tree is a self-balancing binary search tree where the nodes, where the height of the left and the right subtrees cannot be more than 1 for all the nodes. sir, it is compulsory that tree is follow binary search tree properties. Yes, it is compulsory. For AVL tree, it should follows the binary search tree property. Okay. Now, before moving ahead, what should I discuss? Come on to this first slide. इसी को मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इस स्लाइड को. और इसको हम हटा देते हैं. इरेजर ऑप्शन नहीं आ रहा है आज. अच्छा ये पहले सेव हो गया इसलिए हटेगा. ओके, नो इशू. नाउ वी आर स्टार्टिंग अगेन. सपोज सर इस स्लाइड को हटा दीजिए. start creating the binary, start creating a binary search tree. बनाइए. First of all, root node will be 1, then 2. Is it okay? sir 2 को हम बाइनरी सर्च ट्री बना रहे हैं. एक बार वापस से, क्या ये सही है यहाँ तक? Yes, sir, it's okay. नाउ कैलकुलेट द. अब हम AVL ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन AVL ट्री. तो दिस इज द इंसर्शन ऑफ AVL ट्री. एक्चुअली आप इंसर्ट कैसे करोगे AVL ट्री के लिए और क्रिएट कैसे करोगे. सो
First of all, it should be following the binary search tree property. So we are start creating the AVL tree with in very similar way that we have started the creation of binary search tree. So 1 is the root node, 2 is onto the right of that one. Now we सर will एक calculate the बात, balance factor of all nodes. As हेलो soon as we create, yes, सर, हम ये बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसका, इसमें हम ये जो आपने एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 इनको प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तब सर बना सर रूट नोड आ रहा है या फिर नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आया आपके दिमाग में? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। प्री ऑर्डर ऑन ऑर्डर कहाँ से आ गया? सर ऐसे ही पूछ लिया सर कि इसका रूट नोड हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि फर्स्ट वन नोड यूनिट। वैल्यू, फर्स्ट ऑलवेज हमेशा रूट नोड होगा। ये मैंने 10 बार तो बोला है बच्चे। फर्स्ट वैल्यू हमेशा रूट नोड होगी आपको जब भी बाइनरी सर्च ट्री बनाएंगे तब। ओके सर। अभी हम एवीएल ट्री क्रिएट कर रहे हैं इसी सीक्वेंस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एवीएल ट्री के लिए क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एवीएल ट्री? AVL tree is follow the binary It search should tree be a property. binary search tree. वेरी गुड। तो इंसर्शन क्या होगा? हमेशा And बाइनरी it सर्च should ट्री be का ही the होगा। तो फर्स्ट हमने फर्स्ट नोड इंसर्ट करी, देन रूट नोड हुई वो, देन सेकंड नोड वी हैव इंसर्टेड 1 and 2, then we will find out the balance factor of the nodes. Please remember that thing. At every step you have to calculate the balance factor. For 2 the balance factor is 0. 0 for 1 the balance factor is -1. -1. now is this tree is balanced? Yes, Yes, sir. it is balanced. Now Yes, insert the value 3. Yes, sir. Now calculate the balance factor again. 3 for 3 it is 0. One. For 2 it is -1. -1. For 1 it is -2. Minus -2. -2. तो क्या ये बैलेंस है ट्री अब? No, sir. नहीं, sir. it is So not अब हम lie in the आगे range. इंसर्शन नहीं करेंगे। We will stop insertion. First of all, I have to make this tree balanced tree. पहले मुझे इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके इंसर्शन कर पाएंगे। Please remember that thing. So in the insertion of AVL tree or in the creation of an AVL tree, we have to start with the same way that we have used in the binary search tree. We will calculate the balance factor of each node at every step, and as soon as we have got that a particular node is out of range, or we can say the balance factor of a particular node is out of range, we have to stop, we have to make the tree balanced, and then we will continue again. Now how that balancing will be done? For that we are coming on to the rotation. Okay, the term that is known as rotation, it is refers to make the unbalanced tree a balanced tree, or to convert an unbalanced tree into the balanced tree. So have you got it? What is the rotation? Rotation is an operation that makes an unbalanced tree into a balanced tree. Is it clear to all? Like right now 1 2 3 is an unbalanced tree. We will have some kind of rotations and we will perform them rotations, and we will make this 1 2 3 is a balanced tree. हम इसको balanced tree में convert करेंगे, and फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम जाके 4 insert करेंगे. Okay, so to balance itself, an AVL tree may perform the following kinds of rotations. 4 टाइप के रोटेशन परफॉर्म करने होंगे हमको different situations के अकॉर्डिंग. We will see how. First rotation is called left rotation, second is right rotation, third is left and right combination of both, and fourth is right and left, again the combination of both but in reverse direction. Okay, these first and second is known as single rotation, as you are able to see here also, and these two are known as double rotations because in this we are performing 2 rotations. It means left plus right, that's why it is called double. Here we are performing only single, that's why it is called single rotation. So broadly we can categorize into single and double. Furthermore, we can divide or categorize it into the left right and right left rotations. So now we are coming on to the brief introduction of all these types of rotations. So first of all, left rotation.
Okay, so left rotation is also known as RR rotation. अभी थोड़ा उल्टा है, ठीक है, तो ये क्यों है ये भी हम देखेंगे. नाउ कब परफॉर्म करना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना आप ध्यान से, हमें कब परफॉर्म करना है. If the node is inserted into the right subtree of the right subtree of a critical node A, read it carefully, because of these right and right it is also known as RR rotation. इसको हम ध्यान में रखना है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं. If the node is inserted into right subtree of the right subtree of a critical node A and then tree becomes unbalanced, then in that case RR rotation will be performed as shown in this following diagram. First of all, please understand that term. एक समझ में आ गया तो चारों समझ में आ जाएंगे आपको. If the node is inserted into right subtree of the right subtree, look at that first diagram. Okay, सबसे पहले हमने एक नोड A इंसर्ट करी, then B इंसर्ट करा and then C इंसर्ट करा. So it's a binary search tree first of all or not? Yes, it is binary search tree. अब इसके बैलेंस वेक्टर लिखे हुए हैं Yes, यहाँ पर 0, -1 and -2. Is it so or not? Yes, sir. yes, sir. So क्या ये अनबैलेंस है अभी? Yes, sir. Unbalanced Yes, है. sir. It is not Unbalanced lying in है. the range. ये मेरा सेम एग्जांपल है जो मैंने भी यहाँ पर लिया था आपके लिए. It's 1, 2, 3. So it is becoming 0, -1 and -2. Okay, here in example I have taken ABC. So it's 0, -1 and -2. So now in that case, look at that. Which one is the critical node first of all? A. A. A is a critical node. Okay. Okay. Now ये critical node क्यों बनी? Because of the insertion of C. Yes or no? Yes, sir. Before Yes, that sir. it was not a critical node. जब तक B insert था तब तक ये critical node नहीं थी. जैसे C insert हुआ ये critical node बन गई. Yes or no? Yes, sir. जैसा हमने यहाँ पर भी देखा अभी, till 2 it was not a critical node. 1 is not a critical node because the balance vector were 0 and -1. But as soon as I have inserted 3, so balance vector changes and 1 becomes critical node. So now tell me the position of C. C की position क्या है इस वक्त? It is not. Is it in the right subtree of the right subtree of critical node A? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that's why it is. We need to perform what? RR rotation. In this way, you will be able to find कि क्या rotation perform करना है आपको. Is it okay? If the node is inserting into the right subtree of the right subtree of critical node, then I have to perform RR rotation. So it shows me the position of the node because of which the tree is becoming unbalanced. Because of the insertion of that node, tree is becoming imbalanced. Okay, so RR rotation परफॉर्म करना है मुझे. RR का मतलब होता है लेफ्ट रोटेशन. अब आप डायग्राम में देखो, ये जो एरो बना हुआ है ये किस डायरेक्शन में बना हुआ है? लेफ्ट डायरेक्शन में बना हुआ है. यस और नो? Anti-clockwise. यस, एंटी क्लॉकवाइज. लेफ्ट डायरेक्शन में बना हुआ है ना, ये आपको लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है रोटेशन परफॉर्म करने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेफ्ट रोटेशन एक्चुअली. So RR is based on the position of the node to be inserted because of which the balanceness is disturbing. And left rotation means कि मुझे रोटेशन करना कहाँ है, इससे पता लगेगा मुझे. तो लेफ्ट रोटेशन का मतलब होगा कि आप B को बनाएंगे रूट नोड. ये जो बैलेंस ट्री बन रहा है फाइनली आउटपुट ये होगा एक्चुअली. तो क्रिटिकल नोड जो है उसको हम उसके चाइल्ड का चाइल्ड बनाएंगे एक्चुअली. इस तरीके से आप सोच सकते हैं. Okay, so B will become my root node and A is becoming the left child of B and C remains the right child of C. So in this way, this final tree after rotation is B will be the root node, A and C will be the child node of that node B. For which again we calculate the balance vector and we find that it is balanced now. Yes or no? Is it clear to all? Yes, sir. It is balanced. Fully balanced. So अब क्या ये ऑपरेशन क्लियर है सबको? हाउ वी हैव डन दिस ऑपरेशन लेफ्ट रोटेशन? Yes or no? RR rotation or left rotation, is it okay? Sir. Yes.
Sir, but you told that whenever we are given a sequence of numbers and in order to make a binary search tree, the first number is the root node. But हाँ, here the second one is the root node after transformation. after transformation, you have added the answer on your own. We have initiated with the same logic, but to make the tree balanceness, we have to change. We have to transform the tree. We have to rotate the tree. That is all okay. No issue in that. We can do that. We have to do this. Okay, sir. है ना? In सर order to मुझे make the balance tree, in order to make the tree balance, we have to do this transformation. And in that, if some other node is becoming the root node, it will not ultimately you just see that whether the other properties of the binary search tree are violating or not. No, sir, other properties are not violated. That are the main properties, and first node we have initiated as a root node. वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर जरूर तोड़ रहे हैं, अदरवाइज बाकी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर मतलब क्या कहते हैं उसको Maintained है. मेंटेन हो रही है ऑल द, है ना? सो दिस इज अ लास्ट जो बैलेंस ट्री बना है वो आपका बाइनरी सर्च ट्री भी है, और ऑल द नोड्स ऑफ दिस ट्री इज having the balance vector in the range also. So this is an AVL tree. Is it okay? So AVL tree की definition में यही था कि it is a self balancing binary search tree. So binary search tree की properties यही होती हैं कि आपकी left में छोटी nodes और right में बड़ी node होनी चाहिए. वो तो एक रूल है जो हम ट्री को स्टार्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट नोड को हम रूट बना के रखेंगे, ठीक है? लेकिन एवियल ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट नोड को हम रूट ट्री बना के रखेंगे. स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, बट हमेशा हमें ये मिले ऐसा जरूरी नहीं है. इज इट ओके नाउ? यस, इज इट ओके और नॉट? ओके सर एक क्वेश्चन है सर. जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसको क्लियर है ये चीज बच्चे? Yes, sir. एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? क्या लेफ्ट रोटेशन क्लियर है? लेफ्ट रोटेशन कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया है आपको? बहुत सिंपल है. आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जो नोड आपका ए नोड है, यहां पर आपको रोटेशन परफॉर्म करना है बस, क्रिटिकल नोड से इस तरह लेफ्ट और राइट रोटेशन की हम बात कर रहे हैं. तो इसको नीचे लेके जाइए, ए को, और बी को आप रूट नोड बना दीजिए. दैट्स इट. यस, आप कुछ पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था, अगर इसका ये बैलेंसिंग फैक्टर अगर -2 नहीं है, कुछ और है, 2 -2 से बड़ा है, यानी ये ट्री है जो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हाँ, ये ऑपरेशन, हम उसमें भी आएंगे हम लोग. सिंपल मैं में तो उसमें लग भी रहा है आऊंगा. सर. ये तो सिंपल है ना, मैं पूरा एक एग्जांपल भी लेने वाला हूँ. पहले हम सिंपल तो समझ लें. ओके. यस सर. अच्छा, इनके क्वेश्चन से हमें एक चीज और समझनी चाहिए इसी वक्त. मान लीजिए कि क्या हमारे पास कभी किसी नोड का बैलेंस फैक्टर -3 होगा? नहीं सर, हम -2 पे ही रुक जाएंगे. नहीं होगा. हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि कुछ सिचुएशन ऐसी है कि -3 भी हो जाए, लेकिन हमारे पास क्रिटिकल नोड कौन सी होगी केवल, जिसका बैलेंस फैक्टर -2 है. मैं ऐसा एग्जांपल दिखाऊंगा आपको जिसमें -3 भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्रिटिकल नोड कौन सी होगी? रेंज से बाहर निकलते ही वो जिसका फर्स्ट नोड फ्रॉम लीफ टू रूट, जिसका बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ रेंज है, वो मेरी क्रिटिकल नोड होगी हमेशा, एंड डेफिनेटली उसका बैलेंस फैक्टर -2 ही होगा. अब हम आते हैं आगे राइट रोटेशन के ऊपर. इट इज अ लेफ्ट रोटेशन, सॉरी LL रोटेशन, because if the node is inserted into the left subtree of the left subtree of a critical node. Now I think it is clear to all, and the first diagram is showing that thing. Yes or no? ट्री के लेफ्ट पार्ट के सब ट्री में यहां पर tree के क्रिटिकल नोड कौन सी है? सी है. और जिस नोड के कारण अनबैलेंसिंग क्रिएट हो रहा है वो कौन है? ए. ओके, नाउ ए की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी? लेफ्ट ऑफ लेफ्ट सबट्री. लेफ्ट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. सो ये कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है हमें यहाँ पर? राइट रोटेशन. LL का मतलब क्या होता है? राइट रोटेशन. सो हम किस नोड को रोटेट करेंगे? यहां से रोटेट करेंगे राइट डायरेक्शन में. ध्यान दीजिए,
In right direction, I am rotating it. So B will become the root node and C will become the child of that node. This is my balance tree for this. Sir, rotation will be performed on root node only. Root node नहीं, critical node. Critical node. Yes. रूट नोड का कंसेप्ट Okay. यहाँ तो अभी रूट नोड दिख रही है आपको, मैंने बताया ना बच्चे, इसके ऊपर भी कुछ नोड हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हमारा रूट नोड हमेशा बने क्रिटिकल नोड, जी सर. है ना. सो आपको क्रिटिकल नोड पे रोटेशन परफॉर्म करना है, ये ध्यान रखना है आपको. क्रिटिकल नोड और उसके नीचे जो नोड है जस्ट उसका चाइल्ड नोड, उसके बीच में आप ये एरो डालें, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है. यू हैव टू रोटेट इन दिस वे. So this will become the root and this will become the right child of that node. In previously, A is becoming the left child of that node. That's why it is called left rotation. हमने left में rotate किया, यहाँ हमने right में rotate किया. Is it okay? So थोड़ा सा terminology थोड़ा सा confusing होगा, लेकिन आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कोई भूलोगे नहीं ये चीजें. LL का मतलब है किस पोजीशन पर हम इंसर्ट कर रहे हैं, उस पोजीशन के कारण से अनबैलेंसिंग हो रही है. एंड राइट रोटेशन मतलब हमें करना क्या है, उसका आउटपुट क्या है, सॉल्यूशन क्या है. देन आते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन. इट इज नोन एज एलआर रोटेशन. अब इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, एक्चुअली ये होना चाहिए आरएल रोटेशन. देखो इफ द नोड इज, ये वाली भी सिचुएशन हो सकती है. लुक एट दैट फर्स्ट वी. अब इसमें बी के कारण अनबैलेंसिंग हो रही है, लेकिन बी की पोजीशन क्या है, लेफ्ट सब ट्री के राइट पार्ट में, राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड. उल्टा पढ़ेंगे ना इंग्लिश में, राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ क्रिटिकल नोड. यस और नो, एम आई राइट और नॉट? राइट सर. बी इज अ राइट सब ट्री ऑफ ए which is a left subtree of C, critical node. So because of B the tree is becoming unbalanced and the position of B is in the right subtree of the left subtree of the critical node. That's why I need to perform LR rotation. अब देखो ये बहुत बहुत ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि इसमें दो रोटेशन परफॉर्म करने हैं हमको. तो पहले हम परफॉर्म करेंगे लेफ्ट रोटेशन, जैसा आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं. भाई लेफ्ट रोटेशन. फिर हम परफॉर्म करेंगे राइट रोटेशन, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन. तो जो फर्स्ट रोटेशन परफॉर्म हुआ, आप देखो क्या होगा इसमें. इसमें डायरेक्टली वी आर नॉट टचिंग द क्रिटिकल नोड, वी आर नॉट टचिंग डायरेक्टली ऑन टू द क्रिटिकल नोड. अब आप इसमें यदि डायरेक्टली देखो लेफ्ट रोटेशन या राइट रोटेशन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा. अब मान लो आप डायरेक्टली यहाँ पर राइट रोटेशन करते हो या लेफ्ट रोटेशन करते हो तो क्या होगा. क्या ये सही ट्री बन पाएगा? सोचो एक बार ध्यान से. इन बाकी चारों ट्रीज को छोड़ दो, आप एक बार केवल फर्स्ट ट्री पे कंसंट्रेट करिए और परफॉर्म करिए लेफ्ट रोटेशन ऑन बिलो क्रिटिकल नोड और राइट रोटेशन बिफोर बिलो क्रिटिकल नोड, जो हमने अब तक पढ़ा है. नहीं सर, नहीं बन यदि पाएगा. मैं इसको राइट रोटेशन करता हूं तो क्या होगा, ए दो पेरेंट्स बन जाएंगे, सी, और अब बी कहां जाएगा. पोजीशन डिफाइन नहीं होगी सर बी की. अब आप यदि इसको लेफ्ट रोटेट करोगे तो क्या होगा, क्या ये सही नोट बन पाएगा? वापस ट्राई करो एक बार. नहीं बन पाएगा. यस और नो? डू इट फास्ट. No, A will sir. be the root node, C will be the left child, and B will be the right child. A will be the root node, C will be the left child, and B will be the right child. So is it a binary search tree? No. Is it a binary search tree? नो सर. No, sir. So again ये भी फेल हो गया मेरे पास. तो अब लेफ्ट और राइट रोटेशन सिंगल वाले तो फेल हो गए हमारे पास. यहाँ पर इस सिचुएशन में वो काम नहीं कर रहे हैं. So I need to perform two rotations in that case. So firstly what I will do, I will change the orientation of this subtree only. I will change the orientation of this subtree only. So making or applying left rotation on this subtree A and B, I have got that B and A. Is it following the properties of binary search tree? Third one. Yes. Yes. So firstly, Yes, sir. I have changed the orientation by performing the left rotation on this subtree, and I have got the answer like this. Third diagram, CAB.
Again, I have seen that and I have observed that the critical node remains critical. अभी भी critical ही है वो. So again, I need to perform the right rotation in that case. Now right rotation can be performed on this. अब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? केस नंबर 1 या 2 में. जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये दो सिंपल लेफ्ट और राइट, तो मैंने इसको लेफ्ट या राइट केस में कन्वर्ट कर दिया. अब मैं इसमें सिंगल रोटेशन परफॉर्म कर सकता हूं, दैट इज राइट रोटेशन, बिकॉज इट इज इनटू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री. सो एलएल रोटेशन मुझे परफॉर्म करना है यहाँ पर. तो पहले मैंने परफॉर्म किया यहाँ पर राइट रोटेशन, sorry, RR rotation, and then LL rotation, and then it is actually overall I can say it is LR rotation. Is it clear to all now? बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इंसर्शन और डिवीजन दोनों इसी पर बेस्ड होंगे. सर मुझे सेकंड से तो समझ, सेकंड का तो समझ में आ गया जी. एक वो पहले किया. किसी को भी समझ में आया क्या, बताइए एक बार, यस और नो. Yes or no? Sir, please show the previous slide once. Okay, sir. समझ में आ गया क्या आपको? Anyone who has got the concept? No one has got the concept. Okay, tell me, left rotation or right rotation is clear? ये दो चीजें क्लियर है सबको? यस यस, ये तो क्लियर हो गई. All need to answer. First two rotations are clear, left and right. यस सर. No one is answering. I am not audible to anyone. नो सर, यू आर ऑडिबल. सर ये फर्स्ट और सेकंड तो कम समझ में आ गई, ये थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है. It's 12 o'clock already. You have to tell me. किसी को भी समझ में आया है? सिंगल स्टूडेंट. लेफ्ट और राइट भी समझ में नहीं आया किसी को, एक के अलावा? Nobody wants to give the answer even in no. Yes, Asta, you have raised your hand. It means yes or no, I don't know. I am not understanding you. सर मान सकते हैं नहीं आया है. What should I interpret, dears? किशोर आप चुप रहना बेटा एक मिनट. बाकी सब लोगों में से किसी को बोलने दो एक बार. क्या कोई बोलना चाह रहा है, या इसका आंसर मैं आपका आंसर समझ लूं? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग मी, तो किसको बोलोगे आप? I am going to share this PPT to you all. Just read it out and try to understand the concept. At least up to first two rotations, you try to understand the concept. I will ask you in the next lecture again
and then if clear, then we will move ahead with the next two rotations, and we will end up with the insertion and deletion also. हम इसको खत्म करेंगे फिर insertion and deletion perform करके, because in insertion and deletion we need to perform rotations. As soon as we insert the new node, if the unbalancedness is created, then we have to perform rotation. Similarly, when deletion, if we are deleting some nodes and because of deletion, suppose unbalancedness is created, we need to perform the rotations. So in every insertion and deletion, we have to be careful. We have to get the balance vector of every node. If some critical node creates, then we have to perform some rotations. That's why the rotations are very important. And definitely, it will be asked in the midterm as well as in the RT examinations. Okay, so I will share this PPT with you. Rotations तक मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है. You just go through that PPT and try to understand whatever the concepts are there. जितना मैंने पढ़ाया कम से कम उतना तो एक बार आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And I request you all कि आप मुझे आंसर तो दिया करें ताकि मुझे भी समझ में आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मैं जानता नहीं हूँ और आप भी मुझे नहीं जानते हैं. ऐसा लगता है ऐसे जब हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं. नहीं सर, जानते हैं आपको. चलिए, थैंक यू वेरी मच. You can leave the class now. I have taken the attendance already. Thank you very much. Thank you, sir.